स्टार्ट कर दिया है, मैं लाइक कल तक खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ये वाला जो मैंने अभी अभी अपलोड किया था जिसका हम लोग रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं वो नहीं सर, वो वाला नहीं दिखा मैंने। कोई बात नहीं, मैं एक बार ब्रीफ कर दूंगा तुम्हें। हम्म। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन पूरा विजिबल है ना? यस सर। ओके परफेक्ट। तो ये वाला पेपर है, लेट मी गो फुल मोड। मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, ये आईआईएससी बैंगलोर का पेपर है। हम्म। आइए, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स सिमुलेशंस ये लोग करते हैं, एमडी कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं ये। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है बेसिकली, है ना। एक तो ग्राफीन की तरह है, फंक्शनलाइज्ड ग्राफीन, और एक है नेफियन। दिखाता हूँ कौन से वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ये रहा तुम्हारा नेफियन। ठीक है, ये पॉलीमर है बेसिकली, जहाँ पे ये एम जो है तो डिफरेंट हो सकता है ना। ये वाला ग्रुप 2 3 4 जितना भी रखो, एन भी ऐसे ही चेंज कर सकते हो, और एक्स चेंज कर सकते हो, है ना। तो उसके बेसिस पे डिफरेंट तरह के सेम नेफियन के बना सकते हो मॉलिक्यूल्स। ये पॉलीमर है एक। और दूसरा मॉलिक्यूल है अपना ये बेसिकली ग्राफीन शीट है। उसके ऊपर कुछ तो ऑक्साइड्स हैं, और एक आध जगह पे उन्होंने आई थिंक, में सी कहीं पर दिया हुआ है। हाँ, ये वाला मॉलिक्यूल ऐड किया है, लाइक कुछ जगहों पे, जैसे यहाँ पे देखो, एक बेंजीन रिंग है और एक SO3 उस पे अटैच्ड है ना। हाँ। यस। तो 1 2 3 4 5, इस तरह के 5 इन्होंने यहाँ अटैच कर दिए एक तरफ, दूसरा वाला खाली छोड़ दिया। ओके, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेसिकली यही दो मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए, एक तो ये वाला हो गया, और एक ये नेफियन हो गया तुम्हारा। ठीक है, नेफियन हाँ। को PF ऐसे बोलते हैं, पर फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड समथिंग लाइक दैट। और SGO है तुम्हारा probably sulfonated graphene oxide, I think. Let me show you यस। what is graphene oxide. graphene इज oxide तो इट अपन लाइक, जानते ही हैं। हाँ यस, हाँ। लाइक कार्बन नैनो ट्यूब की तरह होता है तो। हाँ, मतलब एक ग्राफीन शीट है उस पे। ओके। ये देखो, एक ग्राफीन शीट है, और यस। इस पे ना अ, जैसे यहाँ का एक बॉन्ड तोड़ करके ये दोनों से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तुम्हारा ऑक्साइड है ना। और कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे यस। ऑक्साइड की जगह सीधा सीधा OH ग्रुप जुड़ा होगा कार्बन से, है ना। तो ये मतलब ऑक्साइड का मैंने ऐसा कुछ एकदम फिक्स वो नहीं देखा है, पर मोस्टली यही रहता है कि रैंडमली कहीं ऑक्साइड तो कहीं OH ग्रुप ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। वो होता है अपना ग्राफीन ऑक्साइड। ओके, तो वी नो द इनिशियल स्ट्रक्चर कि ओके हमें ये दो चीज चाहिए, है ना। यस। फिर अपन इन दोनों का यूज करके ये सॉल्यूशन बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। और इन्होंने बहुत सही चीज किया है कि एक फ्लो चार्ट दे दिया है कि क्या किया इन्होंने। ये देखो, इन्होंने बोला कि ये कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले तो दोनों, आ, एक पॉलीमर का और एक ग्राफीन ऑक्साइड का, मतलब एटॉमिस्टिक मॉडल पहले क्रिएट करते हैं। फिर यस। कंस्ट्रक्ट करते हैं एक सिस्टम दोनों को यूज करके, एमॉर्फस सेल। और फिर जियोमेट्री ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोर्स, एंड देन यस। ये इक्विलिब्रेशन का पार्ट है तुम्हारा NVT, दोनों NVT। और फिर NPT किया इन्होंने, तो सब दिया है तुम्हें ना, टेम्परेचर प्रेशर क्या यस। रखना है, कितने टाइम तक के लिए किया, तो दिस इज गुड। वी डोंट हैव, वी कैन ऑफ कोर्स रीड फ्रॉम कंप्यूटेशनल डिटेल्स मेथड कि क्या क्या किया है, कौन सा फोर्स फील्ड यूज किया। देखो, इन्होंने कंपास किया है सिंपली, है ना। कॉम्पास। कंपास यस। 2 कंपास 3 ये सब नहीं, कंपास सिंपली। ओके। और यहाँ देखो, इवॉल्व समेशन ये यूज किया है। अ, ये तुम्हें मैंने पिछली बार बताया नहीं था, तो एक सिमुलेशन बॉक्स में ना, एक तो होता है तुम्हारा LJ पोटेंशियल, वैंडर वाल्स यस। फोर्सेस को हैंडल हाँ। करने के लिए, यस। और एक होता है कुलॉमिंग इंटरेक्शन को हैंडल करने के लिए। यस। वो कुलॉम वाला इक्वेशन है ना। यस। तो कुलॉम वाला इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वो एक कट ऑफ डिस्टेंस तक ही सॉल्व करते हैं। से फॉर एग्जांपल, इन्होंने लिया है 15 एंगस्ट्रॉम, तो 15 एंगस्ट्रॉम तक उन्होंने कुलॉम इक्वेशन लगानी है, और उसके यस। बाद वो कुलॉम इक्वेशन नहीं लगाते हैं। पर हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, है ना, एज यस। कम्पेयर टू वैन डर वाल्स। तो दे विल, like atoms will experience forces
due to the presence of other atoms if they have charges, even when they are separated by long range. तो उस तरह के फोर्सेस को हैंडल करने के लिए ना दो तीन मेथड है। दो तो मुझे, एक ये हो गया इवॉल्व समेशन कहते हैं, और एक होता है लेट मी सी, आई थिंक पीपीएम मेथड बोलते हैं प्रॉब्लली इसको। यस, आई थिंक लैम्प्स वाले में ऐसा कुछ था, पीपीएम हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ट्रिपल पीएम उन लोग यूज करते हैं ना। हाँ यस, लैंप्स। लाइक तो यस, लॉन्ग रेंज सॉल्वर आई थिंक ऐसा कुछ। हाँ, यस तो ये बेसिकली क्या करता है कि ओके, वैंडरवाल्स और कोलम्बिक यही दो मेनली फोर्सेस होती हैं। तो वैंडरवाल्स का भी कट ऑफ, कोलम्बिक का भी कट ऑफ। लेकिन यस। वी नो कि इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, तो हम ये दो मेथड्स उन्होंने डेवलप किए हैं कि इट विल बेसिकली देन मेक श्योर कि तुम्हारा एंटायर सिस्टम एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, even यस। if it's a periodic system. If it's a periodic system, then it's basically infinite cells are kind of coming into existence. So anyhow, I don't know like how that whole thing works, the mathematics, but this is something that we use when we are introducing PVC, and we have electrostatic attraction or repulsion, like the charges are placed on atoms. Then we use evolve. If you don't use PVC boundary conditions, then it is most likely that you will not need this evolved solution. Yes. Okay, so we know the cutoff. We know the kind of thermostat they are using. Of course, they're using PVC from here, we know. They construct an amorphous cell. Initial density that they have kept is 0.4 to 5. I will show you like how we can do these things. और फिर ठीक है, ये सब तो फ्लो चार्ट में भी दे रखा है इन्होंने, है ना। इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। यस सर। ओके, इसमें मेन काम है ना, जहाँ तक मुझे लगता है वो है स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि वही मेन हेडेक है तुम्हारा, सिस्टम बिल्ड करना। उसके बाद क्या है, फोरसाइट मॉड्यूल का यूज करके ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज और डायनेमिक्स रन करना है और एनपीटी करना है। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है बेसिकली, तुम्हें बस क्लिक क्लिक क्लिक। मेन हेडेक रहता है स्ट्रक्चर प्रिपरेशन। तो मैं I can start with a new project, but I'm just gonna start right here in this project, क्योंकि इसमें मैंने पहले से स्ट्रक्चर बना रखे हैं। In case we need to go back and see, we can do that. यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं मीटिंग, SGOPFSA I think. Okay, cool. What is this? Okay, we don't need that. I'm gonna delete it. We'll start by making two structures. तो मैं ये वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर मुझे बनाना है एक 3D एटॉमिस्टिक डॉक्यूमेंट। इसका नाम दे देते हैं चलो SGO। पहले ग्राफीन ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, सल्फोनेटेड वाला। यू नो व्हाट, सल्फोनेटेड ग्राफीन ऑक्साइड बनाने से पहले मैं ग्राफीन ऑक्साइड बना लेता हूँ। तो इसके लिए SGO की जगह GO कर देता हूँ, या फिर सिंपली ग्राफीन बना लेता हूँ पहले मैं। लाइक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी मुझे ग्राफीन चाहिए, तो ग्राफीन के लिए ना तुम एक यूनिट सेल इंपोर्ट कर सकते हो। इन्होंने स्ट्रक्चर्स में दे रखे हैं बहुत सारे। स्ट्रक्चर्स, मटेरियल्स स्टूडियो है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, बायोविया, मटेरियल्स स्टूडियो, शेयर, एग्जाम नॉट एग्जाम्पल्स, देयर शुड बी स्ट्रक्चर्स। इसमें सिरेमिक्स के अंदर होगा, सिरेमिक्स में। But I think this is for export. I think import करना है। अच्छा, ओ शिट, Yeah. ओके माय बैड। हाँ, इंपोर्ट पे जाना है हमें। You're right. Okay. So the drive is here, and here is my BioVia, Materials Studio, Share, Structures and Ceramics. इसके अंदर बहुत से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे, है ना। अपने को चाहिए ग्राफीन वाला, तो जी से ढूंढ सकते हैं अपन। लेट मी टाइप GRA, ये रहा ग्राफाइट MSI। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
ये देखो ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसी को तुम वन बाय वन अगर प्लेस करोगे अराउंड तो वो ग्राफीन ही बनता है सीधा। यस। अभी एटम्स दिख नहीं रहे हैं तो इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं सो दैट इट्स वेरी क्लियर। हियर यू गो ना। ये है तुम्हारा क्रिस्टल। इसको अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखाऊं ऐसे करके तो तुम देखोगे कि दो लेयर्स रखी हुई हैं, है ना। यस। एक लेयर दूसरा लेयर। तो अपने को ना दो लेयर नहीं चाहिए, अपने को एक ही लेयर चाहिए जैसा कि पेपर में दिया गया है ना। देखो पेपर में ऐसा इधर है। पेपर में एक ही लेयर है। वैसे भी अपन तो ग्राफीन के साथ काम करेंगे ना कि ग्रेफाइट। और ये बेसिकली है क्या, ग्रेफाइट अपना। वी डोंट नीड यस। ग्रेफाइट, वी नीड ग्राफीन। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला डिलीट कर दूंगा। अभी तुम ध्यान से देखो, मैं जब इसको सिलेक्ट करके ना डिलीट करूंगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लाइक एक्टिंग एज वन। यस। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना होगा कि आई थिंक बिल्ड में प्रोबेबली सिमेट्री एंड मेक P1। जब तुम इसको P1 करोगे ना यूनिट सेल को, तो उसके बाद ये दोनों डिटैच हो जाएंगे एंड दिस देन यू कैन डिलीट। So now you are left with just one graphene this layer, है ना। यस। ओके। इसी का सुपर सेल बना लेते हैं। लेट मी मॉडिफाई राइट हियर और इसी को रीनेम कर देता हूँ ग्राफीन GRA। अब मैं इसको सुपर सेल बनाऊंगा, मतलब लाइक आई डोंट वांट जस्ट लाइक 2 3 4 एटम्स, आई वांट large molecule like we have here. You can see इसमें अगर तुम देखो तो like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like around 10 के आसपास इधर बेंजीन रिंग्स हैं। यस। I don't know, I think about 15 इस डायमेंशन में विड्थ 15 है और 10 है बेंजीन रिंग लेंथ में, हाइट में। तो इसका सुपर सेल बनाने के लिए तुम्हें बिल्ड में जाना होता है। बिल्ड में आई थिंक सिमेट्री, अगेन सिमेट्री में सुपर सेल। ओके सुपर सेल में ध्यान से अगर तुम देखो, लेट मी enlarge it. Look at this. This is your origin. This is your A dimension and this is your B dimension. तो अगर मैं A को 2 कर दूं तो तुम देखना कि उस पर्टिकुलर डायमेंशन में ये एक और क्रिस्टल यूनिट आ जाएगा। देखना क्रिएट सुपर सेल, एक और आ गया। हाँ। यस। अगर एक बार और करूं मैं, अब अगर मैं 2 करूंगा ना तो क्या होगा कि इस पूरे को 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसका एक और उधर रख देंगे तो बेसिकली 4 हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल। यस। Okay, let's undo it. We don't want that. We don't want to do that. Now we want 5 in say B क्योंकि ये हमारा हाइट होगा और A में हमें 15 चाहिए, ठीक है। तो we'll do 15 and 5. Great, super sir. There we go. यस। ये है अपने पास। ओ सॉरी, A में अपने को 10 चाहिए था एक्चुअली, सॉरी B में 10 चाहिए था। Let me go undo। A में 15 और B में 10 and we have good structure here। Let's close that one। अब ये तो अपना ग्राफीन लेयर है, मेरे को ग्राफीन ऑक्साइड पहले बनाना है, ठीक है। यस। कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और वहां पर ऑक्साइड डालना है, कुछ जगह पे OH ग्रुप अटैच करना है। तो this is a periodic structure right now। I want to make it non-periodic so I can deal with it as I want। I'm gonna go to symmetry and create non-periodic structure। ये तुम्हारा वो सेल वर्क यस। हटा देगा बेसिकली से। now it's a non-periodic structure, independent molecule। तो I can, for example, select some oxygen and ये हो गया ऑक्सीजन और ये ये तुम्हारा देखो ऑक्साइड लग गया ना यहाँ पर। यस। लेकिन अभी जो है ना वैलेंसी की धज्जियां उड़ गई है यहाँ पर, है ना। ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, मैंने एक और ऑक्सीजन डाल दी यहाँ पे। दैट्स नॉट गुड। तो हमें ना एडजस्ट हाइड्रोजन या फिर आई थिंक यहाँ पर है ना बॉन्ड एक ब्रेक करना चाहिए मुझे। लेट मी अनडू इट। मैंने कल सर्च किया था, मुझे एक स्क्रिप्ट मिली, पर्ल स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ये भी सीख जाओगे कि पर्ल स्क्रिप्ट का यूज करके कैसे काम करना है तुम्हें। ऑफ कोर्स पर्ल तुम्हें आना चाहिए फिर उसके बाद।
तो वो वाला स्क्रिप्ट ना मुझे मिला था मटेरियल्स स्टूडियो के कम्युनिटी में। तो मैं दिखा देता हूँ किस दिस इज गोना हेल्प लेटर। मटेरियल्स स्टूडियो का बायो दिया, कम्युनिटी, इसको दे मटेरियल्स स्टूडियो, ज्वाइन मटेरियल्स स्टूडियो यूजर कम्युनिटी। एंड मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं सीधा साइन इन कर सकता हूँ। ओके एंड यहाँ पर पोस्ट क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, और अगर कुछ सर्च करना है तो यहाँ से सर्च करो। मैंने कल सर्च किया था ग्राफीन ऑक्साइड जैसे, है ना। तो Yes. लाइक बहुत डिटेल नहीं डालना है कि हाउ डू आई डू दैट, हाउ डू आई, जस्ट राइट सम कीवर्ड्स एंड सर्च फॉर इट, दैट्स इट। ये देखो एक एक फाइल है यहाँ पे, है? तो आई थिंक आई डोंट नो मे बी यही वाला मैंने किया होगा। Click on that and it shows file, but you can download from here directly that file if you want. But anyway, I wanted to show you कि ये community है, यहाँ पे question बहुत लोग डालते हैं. You can learn from here and also ask the questions. You can already see maybe you are struggling through a problem and that is already solved and somebody has posted here, so you can check that. Yeah. Anyway, so that is how I found this script, Perl script. Let me see where that is. I think चाहिए रहा, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट दिस पर्ल स्क्रिप्ट लुक्स लाइक। अच्छा, ये पर्ल स्क्रिप्ट तुम खुद से भी बनाना चाहो ना तो यहाँ जाओ, पहले तो फोल्डर करेक्ट वाला सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ और यहाँ होना चाहिए पर्ल स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट, ये देखो, Hmm. क्रिएट एंड देन इट विल स्टार्ट अ पर्ल स्क्रिप्टिंग जीयूआई फॉर यू। फिर यहाँ पे तुम लिख सकते हो जो भी लिखना है तुम्हें, है ना। प्रिंट दिस, सिलेक्ट दैट, तुम सिलेक्ट अ ट्रेजेक्टरी फाइल, फोर साइड डायनेमिक्स करो, सब कुछ तुम यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी दिखाना चाहूंगा कि मेरा मटेरियल्स स्टूडियो रखा है सी ड्राइव में। अरे भैया, मटेरियल्स स्टूडियो शेयर, और इसमें होगा डॉक। डॉक के अंदर जाओगे ना तुम्हें ये रिसोर्सेस मिलेंगी। इसमें जो ये वाला रिसोर्स है ना, दिस विल स्टार्ट अप entire materials studio documentation for you. This is an API, opens up in Hmm. a browser. You can see all the topics here. Say for example you want Yeah. to know how to construct an amorphous cell. Okay, amorphous cell, ये देखो सब कुछ तुम्हें बताएगा। फिर उससे रिलेटेड जो भी है तुम सर्च कर सकते हो, देन यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट, ठीक है। Yeah. अभी पर्ल स्क्रिप्ट के बारे में मान लो तुम्हें जानना है, पर्ल स्क्रिप्ट, चलो ठीक है, ये देखते हैं। मॉडिफाई पर्ल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स, लेट्स सी व्हाट दिस इज। सी इट टेल्स यू ऑल दैट स्टफ, यूजेस स्ट्रिक्ट वार्निंग, वेरिएबल डिक्लेरेशन, लूप, दुनियादारी। तो इसके अलावा जब तुम कोई, Yes. मतलब this is where you can learn all these things. There is really good documentation here where from you can learn Perl scripting also, but you don't have to go too deep. Just try to get your job done. Hmm. Okay, where are we? Yeah, going back to your graphene oxide. So I have this Perl script. How do I execute this Perl script? That is another question. I can open up this Perl script, and if you look at the Perl script, what it does is एक डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है। ये तुम्हारा पॉइंटर है बेसिकली, एक्टिव एक्टिव डॉक्यूमेंट का। एक्टिव डॉक्यूमेंट तो तुम्हें मालूम ही है, मतलब इफ आई सिलेक्ट दिस वन देन दिस बिकम्स एन एक्टिव Yes. This डॉक्यूमेंट। is. Yes. नाउ दिस वन क्रिएट्स अ पॉइंटर टू दिस एक्टिव डॉक्यूमेंट and then it goes on to do some things, like for example what it does is basically it will select some random C and उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर एडजस्ट हाइड्रोजन, जो ये वाला फंक्शन है ना यहाँ पर, Yes. एडजस्ट हाइड्रोजन, Hmm. बेसिकली वो वाला काम करवाता है उससे। तो उस I don't know this। करता क्या है कि कोई भी एक रैंडम बॉन्ड को लेगा, उसको सिंगल बॉन्ड में पहले तो कन्वर्ट करेगा, which I think you can do from here also, edit pattern selection,
नॉट वेरी श्योर, पर लाइक यहाँ से भी कहीं से होता है आई थिंक। तो ये बेसिकली वही करता है, किसी रैंडम पर लाइक बॉन्ड को सिलेक्ट करके उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा एंड देन एडजस्ट कर देगा हाइड्रोजन, ठीक है। Yes. तो दैट इज ऑल इट डज। यहाँ पे तुम फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हो कि कितना परसेंटेज तुम्हें ग्राफीन ऑक्साइड बनाना है, ठीक है। कितने Yes. जगह पे मतलब ऑक्साइड्स डालने हैं तुम्हें। तो इट इज 10%, लेट अस जस्ट स्टिक टू 10% एंड वी वांट टू रन दिस स्क्रिप्ट, ठीक है। रन Yes. करने के लिए आई थिंक टूल्स, स्क्रिप्टिंग एंड रन ऑन सर्वर, दिस इज हाउ यू रन द स्क्रिप्ट, ओके। Yes. इसका एक वो भी है कंट्रोल F5 शॉर्टकट, तो यहाँ से रन करो, या तो मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल F5 एंड मेक श्योर द डॉक्यूमेंट इज एक्टिव सो इट नोज Yes. व्हाट व्हिच डॉक्यूमेंट इट नीड्स टू रन ऑन। ये रन हो चुका है, ओके। तो क्लोज कर देते हैं अब। एक्चुअल डॉक्यूमेंट में ऑफ कोर्स कोई चेंजेस नहीं होगा, जितनी बार रन होता है स्क्रिप्ट तो एक नया फोल्डर क्रिएट किया जाता है मटेरियल्स स्टूडियो में। ये देखो उसी के नाम पे क्रिएट कर दिया है फोल्डर, ओके। ये रहा स्क्रिप्ट, ये रहा आउटपुट, और ये रहा तुम्हारा ग्राफीन ऑक्साइड जो बनाया होगा इसमें। इसका नाम चेंज कर देते हैं ग्राफीन ऑक्साइड। और हाँ, ये स्क्रिप्ट में तुम्हें बताया नहीं, ये जो फाइल नेम है ना वो इम्पोर्टेंट है ना। Okay. कि कौन सा फाइल नेम रीड कर रहा है, आई थिंक यहाँ से तो अगर तुम सही नहीं डालोगे वो फाइल नेम तो दिक्कत करेगा तुम्हें। Anyways, let's go to this graphene oxide, and you can see that some of the like, randomly selected bonds have turned into single bonds and the hydrogen have been adjusted. Yes. तो अपन ये एक्चुअली ग्राफीन ऑक्साइड नहीं है, वी नीड ग्राफीन ऑक्साइड। तो हमें ना एक काम तो ये कर सकते हैं कि सभी हाइड्रोजन एटम्स को जो यहाँ पे है सिलेक्ट करके उनको ऑक्सीजन में बदल दें, ठीक है। बट that is not exactly graphene oxide. If you look at the structure, there are some bonds like here, it is pure oxide, see, दोनों तरफ से Yes. कार्बन बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, you need also that part, right? तो what we will do, we'll see for example इस पॉइंट पे इन दोनों हाइड्रोजन को डिलीट करके मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन डाल सकता हूँ, है ना। Yes. Similarly, नहीं, currently hydroxides लगाए हैं यहाँ पे. नहीं, करंटली सिर्फ हाइड्रोजन है, देयर इज नो ऑक्सीजन। Okay. Okay. हाँ, Yes. तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को डिलीट करके इन दोनों कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन डाल देंगे, वो कर Yes. सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि ये कंजिक्यूटिव बॉन्ड्स, कंजिक्यूटिव Yes. कार्बन एटम्स पर नहीं है। यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो विल डिसाइड, है ना, इट्स अ रैंडम डिसीजन एटलीस्ट Yes. फॉर नाउ। तो अभी तो मैं क्या करूँगा, सभी हाइड्रोजन को सिलेक्ट करके ऑक्सीजन में बदल दूंगा एंड आई कैन ऑफ कोर्स सिलेक्ट वन बाय वन कंट्रोल बटन के साथ, बट आई एम नॉट गोना डू दैट, that would be foolish of me. I'm gonna rather go to probably modify, modify element. अच्छा, before that, ये हाइड्रोजन, इस पे डबल क्लिक करूंगा मैं, oops, it selects all the molecule. I don't want that, I want only hydrogen selection. तो alt Yes. बटन के साथ मैं डबल क्लिक करूंगा इस पे। Yes. now alt बटन के साथ डबल क्लिक करने पे सिर्फ हाइड्रोजन सारे सिलेक्ट हुए हैं। I'm gonna go to modify this selected element into oxygen. Now the element has changed from hydrogen to oxygen. If I click in the empty space somewhere, you will see that it has changed to oxygen. Oxygen is Yes. colored red. Okay. Now I need to make some single oxide. Like here, I don't want this. I want to delete this guy. And I'm gonna go here, say hydrogen, click on this atom, and yep, ये अपने आप पकड़ ले रहा है, देखो। And then click again. That's it. So this is created. I want to delete one more somewhere. For example, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, तो let me delete first. Selection tool and then select this one, delete it. Go to bonding tool, hydrogen selected, start, and this is also oxide now. And of course, see here I can do, delete one of them and go to hydrogen and bond it. Perfect. Now we have some of them, like 3 actually मैंने add किया.
me see if there is one or two more I can do. Yep, यहाँ पर नहीं. I mean, we can do, of course, यहाँ पर भी यहाँ पर, but I would not do that. So in that case, leave it. जितना है उतना ठीक है अभी. Now, these oxygens have their valency not satisfied. So we are going to do adjust hydrogen. So, Yes. this will satisfy all the valencies with hydrogen. This looks all good to me. Save the document. And ये clean structure क्या करेगा कि तुम्हारा अगर strain होगा ना तो it will try to minimize that. If you see, I'm gonna go Yes. click clean structure. See, change हुआ ना? Structure has changed. See, Yes. थोड़ा ये ऊपर हो गया, ये नीचे कहीं कहीं. So anyways, this is one thing we can do. Okay, now my SGO, no, it is just graphene oxide. So GO is ready. I want SGO, which is sulfonated part. Let's go back to the PDF. And if you look at these graphene, sulfonated graphene oxide, you see, we need to add this particular molecule to some carbon atoms, right? They have added 5 of them. We will add 2, 3. How do we do that? I'm gonna go within this. I'm gonna go create one atomistic document. Okay, I'm gonna call it, I don't know, benzene sulfur oxide something. I need a benzene molecule. So let's do that. And then I need SO3. See, SO3 के लिए ना, now you can of course go here. There is sulfur. If you don't have a element here, you can go to periodic table and then select that element. For example, if you want, I don't know, argon, not argon usually, bromine, for example, say bromine, and then you can start drawing here bromine. Anyways, we don't need that. What we need is SO3. SO3 is a fragment which is already available. So we are going to go to fragment browser. And यहाँ पर तुम अगर ऊपर जाओ तो देखोगे functional groups में मतलब बहुत सारे fragments हैं. We will go to functional group because that's where we will get our SO3. And go down, scroll down. I think sulfonic acid, that's the one. So we select that, and now you see there is this mouse के साथ एक fragment type का बना हुआ है ना? If you click somewhere, say here, अच्छा यहाँ पे अभी नहीं होगा. We need hydrogen first of all, क्योंकि हाइड्रोजन के प्लेस में एक्चुअली ऐड करता है फ्रैगमेंट को. And then we need to select the fragment. Now this is a hydrogen, I know that. Let me show you. Sorry, mistake. There we go. And I'm gonna add this sulfonic acid here. So see, अभी selection शुरू हो गया है मेरा. I'm gonna click here and it will add SO3 for me. ठीक है? Yes. I hope this is the molecule that they have. 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, 1 सिंगल बॉन्डेड है विथ OH. ठीक है. Apart from this, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप भी है. ये सल्फोनिक एसिड था, उसका उन्होंने ये बनाया है. और फिर बट इफ यू लुक इन द एंड स्ट्रक्चर यू विल सी दैट बेंजीन का जो ये वाला कार्बन है ना, वो सीधे ग्राफीन के एक कार्बन से अटैच है. देयर इज नो हाइड्रोजन इन बिटवीन, है ना? Right. तो मैं क्या करूँगा, नॉट गोइंग टू ऐड एनी हाइड्रोजन ऑन दिस साइड, जस्ट गोना सेव दिस डॉक्यूमेंट. Selection tool. Come on. This is selection tool. Yep, now it is. I'm going to select all these atoms and copy it. I can copy from here or Control C also. And I'm going to go back to my this document and paste somewhere. ये रहा, paste हो गया ना? I don't know if you can see it. Yellow colored में. Just close this document and work with this one. Here it is. Okay. Okay. मुझे इसको है ना कहीं पे अटैच करना है. लाइक ये पुराना कैलकुलेशन फिनिश हो गया. Okay, here we are. So
I want to remove maybe this hydrogen and add here this particular fragment, entire molecule. Okay. तो सबसे पहले तो मुझे इसे प्लेस करना होगा प्रॉपरली इसके ऊपर, है ना, ऊपर नीचे कहीं भी। तो इसको मुझे मूव करना है, तो हाउ डू वी मूव द एंटायर मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल दैट इज सिलेक्टेड। उसके लिए यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये इधर मूव करने के लिए लेफ्ट, ये राइट, ये अप और ये डाउन, है ना। रिमेंबर लाइक ये वाला है ना स्क्रीन पे कहाँ पे, लाइक राइट नाउ ऑन द स्क्रीन लेफ्ट मीन्स दिस, राइट मीन्स दिस, डाउन means this, and up means this. And that is how it will move. If I change my molecular, orientation in my screen like this, then left would mean this way. Okay. Yes. It is relative to the screen, like how you look at it basically. So I want it to move this side. Okay. I'm gonna set my screen in that way, and then I can say move left. Also, if I want this whole thing to be separated from this toolbar, I can do click on this, ये छोटा सा hand है ना वो, उस पे, Yes. and then you can have this entire toolbox with you, translation and rotation के लिए. You can also change the distance, how much you want it to move. Right now I have it spaced, so it's easier for me. So I want I want this part to be on this side, है ना, इसको मुझे रोटेशन करना होगा बेसिकली ऐसे इधर की ओर. So I can do, I think this one. Nope. Okay. Basically just play with it, है ना. Okay, I think this one is good. This one is good for me, I think. Yes. On my screen, I want it to move right side. I'm gonna go select right side. Okay, this is positioned quite well. I want it a little down. Okay, this looks good. Now I'm gonna go ahead and delete one hydrogen from here. Select and delete. Really hard क्योंकि color same है, carbon का भी, graphene के भी carbon. Anyways, I'm gonna bond them now with hydrogen. And bond. There you go. The bonding has been formed. एक तो हो गया मेरा, एक ही लग गया. Don't worry about the strains and all this. They will be taken care later. है ना? अभी तो बस जोड़ दो तो कैसे भी. I want this. एक दो तीन चाहिए ना अपने को, मान लो एक और चाहिए मुझे तो. अच्छा, remember I pasted this and then I did not do anything. I can again Yes. paste the same molecule here. If I go and paste, it will paste another molecule. See there? Again, I can move it around wherever I want to place it. Let's say go right, left, go up, I think. Yep, go up. And press up or left and then move it. Yep, this looks okay. I'm going to delete this one of the hydrogen molecules from here. Let me move a little bit on right. Select, this one is what we want to delete. This is my carbon I want to attach with this molecule. There you go. Now we have another molecule attached, right? Yeah. The same way basically you can continue doing, and wherever you want to attach, you can do that. I'm just gonna go ahead and save this document and leave it here. Let me adjust the hydrogens Yeah. and clean the structure so that the strains are minimized and the bondings are kind of adjusted. Yeah. Okay, this looks okay. So we have OH group, we have oxides here, and we have also this molecule thing. Now if you go back here, see, this is what it looks like basically. We may not have exactly the same number of carbon atom, oxygen atom, hydrogen atom, but it's kind of like similar. You know? Yeah. It should be representative of that molecule. All right, so we have this ready, and let's not call it graphene oxide anymore, rather SGO. Yes. Yeah. That's what this molecule is. I'm gonna take it to the upper part here and remove these things. I don't need the clutter here. So this code is script. We have graphene and we have graphene oxide now. Cool.
We don't even need graphene access. I'm going to delete that part also. Okay, cool. Within meeting, I'm going to create one folder called structures where I can place now all the structures. Will be easier for me to manage the project. Here, okay. Now we have, oops, hydrogen ban gaya lagta hai. Control Z, save the document, close it. All right. The next structure we want to create is nafion. Nafion looks like this. See? इन्होंने जो लिए हैं उसमें if you look at here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 side kind of like branch something branching है ठीक है 14. Now, this is your monomer. This is what we need to create. इसको साइड में ओपन कर लेते हैं और विंडो मटेरियल स्टूडियो को इधर रखते हैं. बंद करो और ये करो. I hope you can see it. Okay, perfect. So within this structure folder, I'm going to create a domestic document. I'm gonna name it, say, some sort of M repeat unit. I'm gonna call it. Why am I gonna call it M repeat unit? Because I'm gonna create this one with M, ठीक है? और M इन्होंने जो दिया है अपने इसमें, if you look at this right here, it says M they have taken 7 and they have taken 1 X 14. So that's what we are going to take. Okay. So I'm gonna create first this particular one. Okay, इसके 7 बनाएंगे अपन इसके. So now this one is carbon and carbon, basically ethylene, tetrafluoroethylene. Starting with carbon, 1 carbon, 2 carbon. Escape. Go to this crystal so it looks better, makes more sense. And I want chlorine atoms, 2 of them. I'm gonna go back there. See, there is no chlorine, so I'm gonna open periodic table, select chlorine atom, close it, and chlorine. Escape, click, escape. Is this chlorine? No, it's not chlorine. Color से पता चल. I think I need to have this periodic table open. I think the moment I close it probably changes or no wait. Maybe click on OK. Ah yeah. Okay, all right. I have to click on OK, good. And this is chlorine, escape, this is chlorine, escape, this is chlorine, escape, this is chlorine, escape. Perfect. Now I have this tetrafluoroethylene sort of. Let me clean the structures, is better. Looks good. Okay, I need to adjust hydrogen, of course. Perfect. Now I have my repeat unit. See, this is your M wala part, hai na? You need on this side to be, yeah, you need to attach this one, and on the left side you need to attach like whatever is there basically. So for now, they say that M is 7. So basically you need 7 times of this, right? Yes. So this is where you will learn to build polymers. I'm gonna go ahead. So this I'm gonna treat as repeat unit. I'm gonna treat one of the atoms as head, one of the atoms as tail, because I wanna repeat this thing with itself 7 times. I'm gonna go to build polymers, repeat unit, because I wanna create a repeat unit. Here's my dialog box. Repeat unit में जाते हैं. Atom selection तुम्हारा click होना चाहिए. Atom selection tool already active है. I'm gonna select this hydrogen as my head atom. Okay, see? Now it shows some sort of thing, just to tell you. I'm gonna select this atom and say that this is my tail atom. So it now recognizes the backbone. है ना? Backbone को इन्होंने अलग कर दिया. Head and tail is selected. Backbone is good recognized. We are gonna go back to build polymers, and we are building homopolymer using this repeat unit. Okay. So in the library,
We don't need to choose vinyl or anything else. Choose just current project because this is where repeat unit exists. Repeat unit और मीटिंग इस फोल्डर के अंदर है, स्ट्रक्चर्स के अंदर है, ये रहा एम रिपीट यूनिट है selected. How do you want? You want isotactic is whatever. Let me just keep it isotactic. And chain length I'm gonna keep M is 7. I want just one chain. I don't want two. And go build. There you go. You can see this one has 7 of those repeat units, है ना? Nicely aligned with here and here. This was your original structure. Let me go back to this mode. Original structure and poly of M repeat unit. See, it automatically adds poly and creates a new document for you. Yes. Okay, perfect. Let us save that and remove that. Save it. Okay, we have this one. I'm gonna, delete this and repeat, but leave it for now. Moving on, we have this one 7, M is 7. Now we need to attach this particular part on this side. So here is my hydrogen. Instead of hydrogen, I wanna add 2 more carbons in the same backbone. Let's select carbon atom. Now this will add to this hydrogen. I don't want that. Rather, I want to delete this hydrogen first. And there are multiple ways you can create that structure. So I'm just going to go ahead and what comes to my mind for now. This carbon atom, say carbon 0 with this carbon 0 and escape. Perfect. We have 2 carbon atoms. With this carbon atom, one oxygen is associated. You see, with this carbon, there is one oxygen in this entire chain. So oxygen, perfect, escape. And then I think we have carbon. So let's take carbon, another carbon. Okay, perfect. And then we have another carbon. And एक नीचे भी कार्बन लगा हुआ है ना? कार्बन या हाँ एक नीचे भी है ना? फिर इधर एक ऑक्सीजन लगाएंगे अपन. ओके, अपन को एक ऑक्सीजन मांगता, इधर हो गया एक ऑक्सीजन. ठीक है, इसके बाद एस्केप. नाउ आई नीड 1 2 कार्बन्स. कार्बन, अरे भाई कैसा नीड टू, और ये दूसरा कार्बन भी हो गया. लेट मी adjust the structure slightly so it looks better. Okay, looks okay. Now we need here SO3H. So this is one fragment. I'm gonna go ahead again, fragment browser. My fragment is already selected from the past, so I'm just gonna add that fragment. Now I don't want to delete this carbon and add this fragment. Rather, I want to have hydrogen first, so that is deleted and SO3H is placed here. I think I should have one hydrogen added to this first. Oops, this is again carbon. Okay, and then I want my fragment to be there. Here you go. See, now you have that fragment. We have 2 carbons and then your SO3H. So it looks like the kind of structure we have here. So ये side group तो बन गया है अपना. Now we need to take care of N. इन्होंने बोला कि N is 1. So we can leave it here, है ना? N is 1. Anyway, 2 carbon, N is 1. So that's okay. We need to add the fluorines. Fluorines, yes, you're right. Let me add fluorines. Go periodic table. Fluorine. Okay. 1 fluorine with this carbon. Escape. And 2 with this one. Okay, we have 2 of them here. Let me clean the structure so it's better. Perfect, it's good. Now with this carbon atom, I need to have like on this side, that this chain should continue. So I'm gonna adjust hydrogen also. Okay, so what I want is, now look at this. It's very important to recognize which should be your head and which should be tail. This entire chain, the monomer, is created here. What we want to do is replicate it x times, right? X is your 14. That is what they have taken.
So what we want to do, we're gonna create a big polymer with this one Yes, as head or tail, and this. Please. like I think we need to add fluorines in the side chain also, no? In Um. side chain, we have adjusted hydrogen Oh there. yeah, 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 yeah. Right, right. You know Yes. what? You could go ahead, go back, go back, go back. Okay, perfect. Let me. You're right. Thanks for reminding. इस कार्बन पर दो फ्लोरीन चाहिए मुझे. मैं किधर डाल देता हूँ? एक कहीं और. I'm not going to worry too much about their bond angle and all those things. I'm just gonna adjust them later. Okay, we have two fluorines with this carbon. With this carbon, we need one, and with this one, we need three. One, two, three. Good. Okay, we need two with this one. Fluorine one, fluorine two, and two with this one. Perfect. I think we are good, right? Yes. Okay, adjust the hydrogen also. Perfect. Now it is important to recognize what will be your head atom and what will be your tail atom. I'm going to treat this entire as repeat unit, and head will be this one or tail, and this will be the other. So we're going to go again to build polymers, define a repeat unit, make sure your atom selection tool is active. I'm going to say this one is head atom. I'm going to say this hydrogen is my tail atom. Perfectly. Head and tail atom are defined. The backbone is recognized. I'm going to go back to build polymers, homopolymer. And current project, my repeat unit will not be M repeat, rather poly and repeat unit. So this is the current Yes. document, which is what is my repeat unit. And I want it to be repeated X times, which is 14. So let's change that to 14. Now keep it isotactic. Of course, I can do like other ways. Let's just keep it isotactic and then build. This looks, there is something wrong with it or no? Is this correctly formed or not? I think it's correctly formed, right? Because Yeah. see, you have this one chain and then there is another chain, of course. That's okay. The structure is pretty weird, but ठीक है, इसको clean structure करें तो सही. Okay. I don't know how correct this is, but whatever is there. Okay, adjusted hydrogen structure cleaned. So we have this structure also. Both the structures are available with us. Let me Yes. go full screen now. Let me change this name so that we are not fooled by the misnomer. This one is, I think, PSFA property. Okay, we have the structures, initial structures. Oops. Now we want to construct a polymer, construction of a polymer and filler. Amorphous cell construction. Let's do amorphous cell construction now. Before that, I want to just make sure I'm following the good practice. I'm gonna go ahead and geometry optimize for this one using my respective force field. Okay, so I'm gonna use foresight calculation, not dynamics, rather geometry optimization. Quality, let us just give medium. And here's the force field. You see there is compass 2, 3. We're gonna use compass because that is what they are using. Yes. And charges, force field assigned, medium. All good. Electrostatics में अभी atom based है क्योंकि ये simply geometry optimization we are doing, and there is just one molecule. It's not like we are doing PVC structure, right? If it was a PVC structure, then it would, I think automatically it will show that evolved or ppm or something like that. Job control, I'm gonna rename it, but let it be automatically decided. And it's just one core because I think all the CPUs are probably engaged. Yeah, it's better to run one core. I think all good. Let's just run geometry optimization of this molecule. Close.
enough. Oops, energy is good, I think. Quite negative, but I'm not sure. 7 seconds. I guess this is good enough for me. बार बार वो क्यों खुल जाता है साला? ये ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन के बाद यहाँ रखा हुआ है. ये रहा ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज्ड वर्जन. Okay, this is how it looks like. Perfect. Pretty weird. I mean, did not expect this one. Anyway, so okay. Let's go. Let's close this one. We have this one. Oh man, remove this. I want to remove the server files. Close this one. Close this one. Okay, here we are. Now we're gonna optimize this one. Okay. Just want to follow good practices so that we're not later repenting. Compass, all those things. Automatic setup. Let's run on it. Okay, we have another folder here. That's geometry optimization. Okay. Oops, इसकी एनर्जी काफी हाई है भाई. 8,744. Seriously, really heavy. Anyways, I'm gonna go ahead. Maybe this is not exactly the graphene molecule they had, but whatever we have in our hands for now. Okay, so SGO, we have both the structures optimized now. Let's close this one. And I'm gonna move on to amorphous constructions. I'm gonna say amorphous. And this folder I'm gonna keep it within this one, just to make sure everything is all good. Okay, now I'm gonna go ahead and create a system, amorphous cell, as I mentioned in the paper. Construction is selected, quality is fine. This fine is again, I think I don't know what is this fine going to do. Probably the second options. Temperature 298, segment log here, loading steps 1000. Include non-pole tag controls and check close contact. This is always, I think, good because it will make sure that the two atoms are not placed such that it's too bad. But this will again increase the computation time. I'm just gonna keep it unselected for now. And you can do it both ways, of course. I want to optimize the geometry. Okay, so it will build the system and then optimize the geometry. So defined, you can optimize the geometry and I'm going to do that. Okay, for selection, let me go and select the right molecules from my project structures. We have one SGO from optimized structure. And we want to select from structures optimized PSFA also. Here we go. This is good. Now, in your paper, see, look at the box length that they have taken, 62 to 75 angstrom, which is like 6.2 to 7.5 nanometers. And the total number of atoms are 18,000 to 28,000. Also, they have constructed many cells actually. Let me see where that is. Here, typical construction of dry nafion SGO. So, come on. Not even select. ड्राई मतलब एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है इस पे, है ना, इस वाले सिस्टम में सिर्फ नेफियन और एसजीओ है. और this matrix is zero matrix. Okay, fine. So when there is no water, that is the one that we are going to construct without water. And they do some systems like with weight percent of this SGO, graphene oxide, sulfonated graphene oxide. They vary from, I think, 2 weight percent, 4 weight percent, 6 weight percent. कहीं पे तो लिखा है. Yeah, I think वो नीचे था, I guess. नीचे था क्या?
हाँ बस यहीं पे। ये रहा। हाँ, देखो क्या बोल रहा है कि various weight percentage of SU were incorporated in PFSA polymer to construct the domestic model of this nanocomposite. So we're gonna do 2 weight percent. ठीक है? Yes. So we have selected out all correct molecules. We're gonna keep SCO2 weight percent. Weight percent is 20 right now, so I'm just gonna increase this one and see what that how that changes. तो ये पैकिंग क्यों है भाई? कंस्ट्रक्शन करो ना इसको. Okay, 1 point. Okay, this is 15. This is good. ठीक है. I mean, we don't have exactly 2 weight percent. The reason could be that the number of atoms in SGO is different from what they have taken. है ना? Yes. So okay, default calculation of unit cell dimension is this one. Energy is compass. इसलिए आ रहा है. Because we are going to construct an amorphous cell, which will be Yes. periodic, and for periodic boundary condition of your in your cell, you must use an evolved electrostatic method, right? They have different methods. They don't have ppm here. Anyways, I'm gonna go ahead with evolved because that's what they are using also. Van der Waals is good. Let's see the distances. Van der Waals 15.5 is good because 15 angstrom I think they are using. My computer, yeah, name automatic रहने दो. Setup, construction, fine. Density we can create at 0.4 and 0.5. That's what they have said, but I'm just gonna create something really low density so that it's easier. Because when you're creating low density system, your simulation box size will be higher, and packing, 14 of these in one of these will be easier for you, right? Yes. So just want to create the system pretty easily. So I'm just going to keep it maybe 0. Yeah, so 1. But then, क्योंकि density मैंने बहुत कम बनाई है यहाँ पर, when I'm running dynamics, I have to run little longer so that NPT dynamics so that the density is perfectly fine of my system. So I'm gonna take that risk. It's totally fine. You see, इसका ये बढ़ गया अपने आप density जम कर दी मैंने तो. You can try with 0.4 and 5 if you want later. If you want to do that, I'm gonna go ahead and run it. Okay, let's see. Amorphous cell running. This should be done like quickly, I think. So while this one runs, let me go ahead and show you what I did yesterday. It should be somewhere here. Nafion to yeah, this folder. So this is how I did. Okay, यही तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का, यही तरीका है कंस्ट्रक्ट करने का तुम्हारा सिस्टम. स्ट्रक्चर जनरेशन स्क्रिप्ट ये सब ठीक है. इससे ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन इट्स ओके. ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन नाफियन के लिए ठीक है. कंस्ट्रक्ट इनपुट. इसमें ना पता है प्रॉब्लम क्या था मेरे साथ. लाइक मैंने कंस्ट्रक्टेड माय सिस्टम. लेट मी शो यू हाउ माय कंस्ट्रक्टेड सिस्टम लुक्स लाइक. दिस yep, this is how it looks like, my constructed system. After the construction, look at this. The molecule was really huge, but look at how it is packed. Really compact, you know? Yes. That happened because the pressure in this unit cell is really high, like super high. The pressure is really bad. So when I was running the dynamics, pressure was super high. When I was running the dynamics, like if you look at this paper, they directly go to NVT after geometry optimization, of course. NVT is 750 Kelvin for 200 picoseconds. When I was trying to run NVT for even a small time, it failed. It failed like every time it failed basically. So what I did, मैंने क्या किया कि मैंने जो टाइम स्टेप है ना बहुत छोटा कर दिया था. यूजुअली हम लोग 1 या 2 फेमटोसेकंड रखते हैं. आई रिड्यूस्ड इट बाय 10. 0.01 मैंने रखा. नेमिंग कैन बी एक्चुअली मिसलीडिंग. सो लेट मी शो यू द कैलकुलेशन. I hope this is correctly set. This is construction. Here I think dynamics, more and period.
So the time step like बहुत कम टाइम स्टेप लेकर के मैंने बहुत कम समय के just 5,000 steps perform किया मैंने. So this is what I did, like multiple times I had to do. देखो एक Yes. दो तीन चार नाम पे बन जाओ ठीक है कोई भी एनपीटी एनवीटी हो सकता है मैं बहुत लेजी था नेम चेंज करने के लिए एक्चुअली 1 2 3 4 5 so I ran multiple of them Yes. and फाइनल है ना जितनी बार तुम रन कर रहे हो ना मैंने like when I was running for example this one I made sure कि I use restart and append to current trajectory इस तरह से होता गया कि जो previous trajectory है वो एक दूसरे से associated होंगी and when I play the animation I can see all of them at once तो वो मैंने सभी के साथ किया था. So this one is like final run जो अभी finished हुआ है I think and this one is needs more work actually. So what I was saying कि जो construct किया था मैंने system वो really bad था like look at this is how it was actually and the big molecule was suppressed because of the high pressure. System was unstable basically. So I had to, go through a lot of these NVD and PD runs with really small time steps, sometimes 0.01, sometimes 0.1, whatever worked. So yeah, I had to do multiple steps for so many, like really long, like 5,000. There were times when I did it for 100,000 steps. And finally, the stress was less and the system would then work. So abhi jo maine run kiya, I think I ran with, let me see, I ran with 0.5 femtoseconds per step. So rather than 0.01, which is like very small and takes too much time to run. So anyways, this is final structure. Let me show you how it evolves. First it expands and then, so this is all that I have so far. It run, see कैसे unfold हो रहा है ना ये वाला structure Yes. because the pressure then reduces to 1 atm. फिर बाद में अगले स्टेप पे हम रिड्यूस कर रहे होंगे यूनिटी में. हाँ, slowly. हम्म. Yeah, you just have to make sure like anyhow run the dynamics by keeping the time step very small. That is one way and run it for long ताकि धीरे धीरे जो है तो तुम्हारा इसका स्ट्रेस वगैरह खत्म हो है ना. Yes. Let me, and you know what this one does recalculate atom visibility every time. I cannot show you right here but I'll show you what it does. Let me do that first right now here. Instead of loop let's go to stop at end. Okay, this is what I have currently. And let me go to steps and see how many steps I have done so far. You can see that. Mm, I don't think there must be somewhere. Okay. 3.9 picoseconds total run है अभी तक का. This is very small again. So anyways, I can run it, but I'm not going to invest too much time in it. I know that this is going to work. है ना कैसे भी करके stress Yes. alleviate करो और फिर उसके बाद जो है तो basically just follow this particular document that says Yeah. NVT Dynamics 750. So once I have removed all the stresses and I know my system is stable, I can start. Because right now, what I've been doing is probably geometry optimized, and that's it. I mean, I know I was doing NVD dynamics, but I was removing all this stress, right? So this is where I Yes. am right now. So I think I can, this structure is probably in a good state to start with NVD dynamics at 750 Kelvin and then move on with other things. So this is all easy, I think. Just running the dynamics and nothing else. So yeah, that's basically all. And this packing is still being done. Time लगेगा इसमें. Anyway, so you know how it's being done, right? Yes. Run the dynamics, and then comes the analysis part. Like, how do you analyze this whole thing? Yes. In the Like we document, gen what the वो like uh-huh. like do we generate
really analyze only the final state, right? I'm sorry, एक बार फिर से बोलो ना. Like when we do analysis, uh, like what kind of analysis do we do? Like राइट. सो तुमने सिस्टम रन कर लिया, ठीक है. मेरे पास जो बाकी सॉल्यूशंस yes, उस पर दिखाता हूँ ऊपर. से फॉर इंस्टेंस ये वाला रन लेता हूँ मैं. हियर इज माय सिस्टम. mm, देखो एटम्स बाहर है ना इसके, yes, सीन इटसेल्फ के. I'm gonna go here, options, and recalculate atom visibility every frame. What it will do, ये सारे atoms को है ना, using periodic boundary condition, it will map their coordinates within the cell. That is what it does. mm, Recalculate atom visibility every frame, basically. So if I run this animation, you see, oh, it's still going out. Okay. Before that, I think I need to go to display style, lattice, and instead of original, I want default. So now the atoms won't, I mean, in reality, atoms are going out actually, yes, but PVC is, mapping their coordinates back into the system. Okay. So I believe सब कुछ अंदर ही रहेगा. yes, You can see everything moving within the system. Yeah, this is your run. Say for example, you have run your NPT or whatever ensemble you want to run. And this is your final basically trajectory file. And now you want to yes, analyze some things, like you want to find out how the temperature varied over the time, pressure, density, or maybe you want to find out RDF of maybe some atom, mm, किसी atom के around बाकी atoms का, या फिर और भी possible है. yes, For example, एक पॉलीमर के लिए एंड टू एंड डिस्टेंस क्या है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, उस तरह की चीजें. right, I think it selected all the polymers also. I don't want to. mm. I wanted to see just polymers. It's not. Because I think end-to-end वाला I think lens वाले में था ये उन्होंने end-to-end distance निकाला था polymer का हम्म. lens वाले में, right? इसके अलावा like when you create, I don't know, like I'm just gonna show you here. ये polymer का अपना backbone होता है, right? So if you Mm, want to visualize them separately, like if you don't have these colors, will help you see the polymer, right? But in yes, case, let me show you. Instead of linear chain, if I just say element, it's really hard to tell where is which one, which polymer, right? You cannot tell. yes, All of them are basically atoms. That's all you can see. And that is why you can go to display style and choose various methods. I'm gonna go linear chain so I can visually detect where the polymer chains are. yes, And I should tell you this one. In edits atom selection, this is really powerful tool, I'm telling you. Select by property. So you want to select maybe a polymer chain, okay? Selecting visually is not that easy. Like, yes, how do I select all the atoms in this particular chain? Not easy. So you can use this atom selection tool. I'm gonna select by maybe backbone atom. Select by property is a backbone atom. True. What it will do basically, it will select all the atoms in backbone. Okay. That does not mean all the atoms in the polymer. It just means in the backbone. Select. तो यहाँ देखो selected 310 atoms दिखा रहा था ना. yes, It has selected all those backbone atoms. You can see I think some yellow color here, some yellow color here, just for the backbone atoms also here. mm, And then create sets of all those backbone atoms. Create set. You can call it all the backbone atoms. And save it. Later you can work on with this set. Anyways, this is selection tool which is you can explore later, like और बहुत से तरीके हैं यहाँ select करने के. For example, you can select by name. You can say select all the carbon atoms
that match this criteria. It selected all the carbon atoms matching this particular criteria. No? Yes. Anyways, it's enough of playing with the atom selection tool. I wanted to go ahead and do some analysis of foresight and analysis. This is a trajectory file that we want to analyze, and some analysis parts are given to you here. For example, you want to figure out what is the density variation with time, Yes. or how cell dimensions change with time, for example. Just select and click analyze. It Yes. remains constant, probably because it is NVT run. Yep, NVT run है ना, इसलिए इसका Yes. dimension नहीं बदल रहा है. Volume is fixed constant. So, मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट अगर तुम चेक करना चाहते हो तो तुम्हें चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा. बैकबोन एटम्स है ना. Yes. ये कहाँ से आ रहा है पता है? सेट्स से. Let me go ahead. Go to edits. Edit sets. I'm gonna delete this set for now. And I want to select maybe say one of the chains. इसके पहले मैं डिस्प्ले स्टाइल थोड़ा ठीक कर लेता हूँ अपना. I'm gonna say line to all of them, and then just the polymer atoms. क्योंकि इससे मुझे आसानी होगी सिलेक्ट करने में. अब सभी को सिलेक्ट कर लिया. कैसे काम करता है ये? Let's select just one. Select. Okay, fine. So see, this one has selected just this polymer, right? I used function key and double clicked on that polymer actually. So this has been selected. I'm going to create a set. I'm going to call it AP1 for polymer 1. Show set, अगर इसमें click करूँगा ना तो it will highlight that particular polymer and it will also show the P1 on top of it. Do this. I don't know if you can see, this one is highlighted and यहाँ पर P1 भी लिखा हुआ आ रहा है. Okay, so we have this set. We go to foresight analysis and we select mean square displacement because we want to calculate mean square displacement of this particular chain. Yes. Right, throughout the trajectory. तो okay, trajectory का name select कर लिया है sets में. अभी मैंने create किया ना P1. P1, यहाँ yes. वो edit में जा करके. Okay, so we can select that particular chain of which we want to calculate MSD. And कौन से frame से कौन से frame तक तुम्हें calculate करना. Like right now we have 8 total frames. All of them are I think selected. Yes. Oh, we have 16 total frames actually. और ये कर रहा है 10 से 80 पिकोसेकंड के बीच में. You can change those things of course from here. Let's see if I increase this. I can increase up to 16. Okay, perfect. And let us now analyze. Here you go. Total mean square displacement is this one, and total velocity linear feet. This one is linear feet of that. Usually, no, it's not a good idea to plot MST of all entire trajectory. Okay. Let me show. एक छोटा सा पार्ट लेते हैं ट्रैजेक्टरी का और उसका सिर्फ एमएसटी करते हैं. That like it has selected 1 to 10 का ही करते हैं. Nice. The linear fit is better than the last one. R square is 99 and the diffusion coefficient is this much. So I mean it's not going to be correct of course क्योंकि सिर्फ NVT run किया है. I don't know 16 whatever picoseconds. It's not going to be correct, but this is how you can do it. Okay. Yes. And of course here is your data point. So I've just shown you like okay, this is one analysis that you can do. If you have correct trajectory, you're most likely gonna get a good diffusion coefficient.
Rest of the things you can explore from analysis part here. And if there is something that is not listed here and you want to do, in that case, you have to write your own Perl script. Or Okay. you can go on the Materials Studio community. दिखाया था ना? Yes. Probably search key and to and distance, for example, you want to calculate. I don't see anyone has given any file. But anyway, this is where you can find, they have given. You can modify a script and then run. You know how to run, right? I've shown you already. Yes. Yes. That's all I think. इसमें एनालिसिस की बात कर रहे थे हम लोग, मुझे तो बना नहीं है। इस पेपर में उन्होंने क्या क्या दिया है देखो तो। टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी, ये वाला प्लॉट तो कर सकते हो। अगर एमपीटी रन कर रहे हो तो दिस प्लॉट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू मेक, है ना? Yes. क्योंकि डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही तुम्हें ट्रेजेक्टरी से ही मिलते हैं, लाइक बड़ी इजीली तुम्हें प्रिंट करके देता है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, इसमें मैंने एनपीटी रन किया है क्या कहीं पर? हाँ, ये रहा। जब मैं एनपीटी रन किया था तो देखो मुझे डेंसिटी दे रहा है ना ये प्लॉट, Yes. टेम्परेचर प्लॉट भी दे रहा है ना। अभी तुम्हारा काम है कि कैसे इस डेटा को प्लॉट करना। इफ यू वांट टू कॉपी ऑल दिस डेटा, यू कैन सिंपली सिलेक्ट ऑल ऑफ इट, कंट्रोल सी, गो टू नोटपैड एंड पेस्ट। ये क्या करेगा तुम्हारा? ये तुम्हारा टाइम स्टेप और ये है तुम्हारा उस पर जो वैल्यू था टेम्परेचर का। Yes. यहाँ से तुम इसको कॉपी कर लो और डेंसिटी पूरी करनी है तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, नोटपैड, create new notepad. You have both the data points, right? Yes. तो इस टाइम स्टेप पे 9 पॉइंट समथिंग पे 10 पॉइंट पे तुम्हारे पास टेम्परेचर भी है, तुम्हारे पास टेम्परेचर भी, प्लॉट जैसे करना है तुम्हें, है कि नहीं? Yes. Yes. Right. तो ये वाला प्लॉट तो तुम बना सकते हो आसानी से। अगर if you can make this particular plot, you should see this kind of curve. उस पर लीनियर फिट करने की जरूरत होगी तुम्हें। आई डोंट नो, पॉलीमर फिजिक्स पढ़ा था क्या तुम लोगों ने? Polymer physics, नहीं sir. तो anyways, if you plot density with temperature or specific volume with temperature also, बस स्पेसिफिक वॉल्यूम के केस में ग्राफ उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे ऊपर की ओर जाना चाहिए। डेंसिटी के केस में नीचे की ओर आ रहा है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे ना स्लोप चेंज होता है इस प्लॉट का। ये देखो लीनियर फिट से पता चल रहा है ना, ये ऐसे जाना चाहिए पर एक्चुअली यहाँ ऐसे जाता है। द पॉइंट वेयर इट चेंजेस इट्स स्लोप, वो टेम्परेचर तुम्हारा पीजी होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज वेयर the polymer changes from glassy state to rubbery state basically. So anyways, this is like one thing that they have reported, and you can also get density with is probably experimental data on the report calculate the elastic modulus. I think these things also can be calculated, but I'm not sure exactly how. I think that's it. So ये basically था, है ना? You can reproduce at least density versus temperature data and calculate glass transition temperature of your polymer when the polymer is loaded with sulfurous graphene oxide.